Assalamu alaikum. Okay, so for this video, I'll be solving A-level mathematics, paper 3, variant 2 from May June 2024. So let's get started. Question 1. Sketch the graph of y equals to mod of x minus 2a, where a is a positive constant. Okay, so our y is x minus 2a. अब क्योंकि हमें मॉड गिवन है तो हम इनको दो पीस वाइज फंक्शन में ब्रेक कर सकते हैं. अब y is equals to x minus 2a when x minus 2a is positive and y is equals to minus x minus 2a when x minus 2a is negative. This implies that a y is uh, our y is x minus 2a and then minus x plus 2a for x more than 2a and x less than 2. अब हमने बस ये ग्राफ करना है, स्केच करना है. This will be our y-axis, sorry, then this will be our x-axis. Let me just connect this. And a is a positive constant, so 2a will be a positive constant. Let's say this is 2a. Then for x minus 2a, it's a straight line with a gradient of 1. So if we go to 3a, at 2a, y is 0. For x is equals to 2a, y is equals to 0. So we have a point over here. And then when x is 3a, our y will be at a. And for the region where x is less than 2a, we have a gradient of -1. So at x is equals to a, again our y will be at a. And when x is equals to 0, our y is 2a from this equation. So this is 2a. Now we just have to connect the points. It's a rough sketch, but yeah, this will be the plot or the sketch for this question. It looks something like this. Then we are supposed to solve the inequality. 2x minus 3 is less than x minus 2a mod. We know for x more than 2a, our x minus 2a ka mod is equals to x minus 2a, and for x less than 2a, our x minus 2a ka mod is 2a minus x. It's just minus x plus 2a, तो मैंने 2a minus x लिख दिया है. Okay, इन दो regions के लिए I need to solve this inequality, जो कि इस respective case में बन जाएगी 2x minus 3a is less than x minus 2a, और इस केस में it will be 2x minus 3a is less than 2a minus x. x को इधर लेके 3a को इधर लेके जाऊंगा तो it will be 2x minus x is less than 3a plus 2a, x is less than 5a, or I should x minus 2a, 2x minus 3a is less than x minus 2a. There are gets a minus x plus 3a minus 2, and this is a. This is saying k for the region when x is more than 2a, I should have an x less than a to have an answer to this inequality, which is not acceptable. We can just ignore it. And for the region x is less than 2a, our answer should be x को इधर ले आके 2x plus x is less than 2a plus 3a, and 3x is less than 5a, x less than 5 by 3a. 2a for the region x is less than 2a, our x should be
less than 5 by 3a to be an answer to this inequality, which is acceptable because 5 by 3a is below 2a. 5 by 3 is 1 point something. So yeah, this will be the answer. Express this expression in partial fractions. So the first thing we can do is resolve the denominator. 2x squared minus 5x minus 12 can be written as 2x squared minus 8x minus 3x minus 12 is equals to 2x common लिया x minus 4 minus 3 common लिया यहाँ पे प्लस आएगा because minus 8 plus 3 is minus 5, so x minus 4 and then x minus 4 2x plus 3. तो जो हमारी ये एक्सप्रेशन है दिस कैन बी रिटन एज 6x square minus 9x minus 16 over 2x square minus 5x minus 12. इस चीज़ को मैंने फैक्टराइज कर लिया है तो आई कैन राइट x minus 4 2x plus 3. Now this is a quadratic expression over a quadratic expression which makes it an improper fraction. So उसके ये partial fractions में we do something like this: a plus b plus c. और b के ऊपर एक लीनियर फैक्टर और c के ऊपर इसका दूसरा लीनियर फैक्टर. And this is identical to this. Basically what identicality means कि it will be true for all the values of x, which implies k 6x square minus 9x minus 16 is identical to, because I can write this as 2x plus 3 plus b to 2x plus 3 plus c to x minus 4 all over x minus 4 2x plus 3. चूंकि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर आइडेंटिकल होंगे, तो आई कैन राइट दैट दिस is identical to a into x minus 4 2x plus 3 plus b into 2x plus 3 plus c into x minus 4. This is true for all the values of x, and we pick some values of x to find a, b, and c. We can choose any value, but we need to be smart with that so that हमें a, b, c ढूंढने में आसानी हो. I choose x is equals to 4, which gives 6 into 4 square minus 9 into 4 minus 16 identical to a into 0 plus b into 2 4 is 8 plus 3 is 11 plus c into 0. So this cancels out a and c from the equation. We are left with b is equals to, basically if you solve this part and divide by 11 you will get b is equals to minus yeah, b is equals to 4. I did this in my calculator. Okay, so then you can choose x is equals to negative 3 by 2, which gives 6 into negative 3 by 2 square minus 9 into negative 3 by 2 minus 16 identical to a. Now this is 0 because of this factor. 2 into minus 1.5 is minus 3 plus 3 is 0, then plus b, and then you get a 0, and then c into minus 3 by 2 minus 4. If you resolve this, you'll end up with c is equals to minus 2, and then you can choose x is equals to 0, which gives
minus 16 identical to a into minus 4, 3 plus b is 4 into 3 plus c is minus 2 into minus 4, and this will give you a is equals to 3, and you can just put this value back in this and you'll have your expression expressed as partial fractions. So a is 3, b is 4, and then c is 2. Okay, so this is the same expression as this, expressed in partial fractions. So this is your answer. Moving on to question 3. The variables satisfy the equation. Show the graph of y against x is a straight line. So starting from a is equals to 2y minus 1 is equals to b raised to the power x minus y. What we can do is take natural log of both sides. What you'll end up with is 2y minus 1. Again, a is equals to x minus y. Again, b. Now you just need to simplify this expression or equation for y in terms of x. You have 2y into ln a minus ln a is equals to x ln b minus y ln b, 2y ln a plus y ln b is equals to x ln b minus, sorry, plus ln a. Now this 2, now you can take y common and you'll be left with 2 ln a plus ln b is equals to x ln b plus ln a, and essentially this is enough to show that this is a straight line. You can divide by this thing and then this will be your gradient and this will be your intercept, because ये फिर आपकी mx plus p वाली फॉर्म बन जाएगी. So if you can resolve यहाँ तक, then yes, आपकी y और x is a straight line. उसके बाद it's saying कि a is equals to b cube given है. You're supposed to find the straight line की equation in the simplest form. So अगर मैं इधर वापस आऊँ, I guess इसको एक्सप्रेस कर लेना चाहिए था. 2 ln a plus ln b is equals to x ln b plus ln a. तो सबसे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ. y ये है मेरे पास y ln a square b is equals to x ln b plus ln a. बेसिकली ये 2a की पावर और दोनों प्लस हो रहे थे तो एक सिंगल लॉग के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने. सही. अब बस उसके बाद आई नीड टू पुट a इज इक्वल्स टू b क्यूब. इसको सब्स्टिट्यूट करना है. y ln b7 is equals to x ln b plus ln b क्यूब. b7 कैसा है? a square is b6 and then एक b और है तो b7. अब ये 7 बाहर आ जाएगा. हम ऊपर आ जाते हैं. 7y ln b is equals to x ln b plus 3 ln b. ln b can cancel out and you're left with y is equals to 1 by 7x plus 3 by 7, and this will be your answer. Question 4. The equation of curve is given and the gradient is asked at point y is equals to 1. You still need the x coordinate of the point, so I'll just put
y is equals to 1 in the equation, you have e to the 2x plus e to the x minus 6 is equals to 0. Now you can simply solve as a quadratic equation, or you can substitute u is equals to e to the x. So you have u square plus u minus 6 is equals to 0 because u square is e to the 2x. Then u square plus 3u minus 2u minus 6 is equals to 0. U common लेके u plus 3 minus 2 common लेके u plus 3 is equals to 0. U plus 3 u minus 2 is 0. U is minus 3 or u is 2. Now e to the x is either minus 3 or 2. This cannot be true because e to the x cannot be negative, and then this gives us x is equals to a and 2. So the point where y is 1 or x is a and 2, जिस पॉइंट पे ग्रेडियंट निकालना है उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए. Now we just need to differentiate the equation. Plus y square e to the x minus 6 is equals to 0. What we can do is differentiate the whole equation by x. I can write it like this as well. Okay, so जब हम इस चीज़ को differentiate करेंगे, we'll go with the product rule. पहले we need to differentiate y with respect to x, which is simply dy by dx, and e to the 2x. Then we need to differentiate e to the 2x with respect to x, which is 2e to the 2x, and then y as it is आ जाएगा. Now we need to differentiate y square with respect to x, which is 2y dy by dx. And then we need to differentiate e to the x, which is e to the x. And differentiating 6 with respect to x is just simply 0. अब इस equation में we need to put y is equals to 1, x is equals to a and 2. If x is a and 2, then e to the 2x is e to the x square, which is e to the a and 2 square, which is 2 square 4, and e to the x is 2. तो ओके, dy by dx को मैं y प्राइम लिखता हूँ, y प्राइम इंटू 4 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 1 बिकॉज y 1 है, प्लस 2 1 y prime plus e to the x is 2 1 square is equals to 0, and you just need to resolve this equation. It's simply 4y prime plus 2y prime. It's supposed to be 2y dy by dx into e to the x. So इस e to the x की वजह से यहाँ पे भी एक 2 आएगा. So this is 4y prime plus 8 plus 4y prime plus 2 is equals to 0. 8y prime plus 10 is equals to 0, implying here y prime, which is dy by dx, which is the gradient, is negative 5 by 4 or negative 1.25. Gradient पूछा हुआ है, gradient is equals to negative 1.25, and this will be your answer. Question 5. It is given that the equation has only one root. It has only one root. Show by calculation that this root lies in the interval this. Okay, so the root of this equation is the same as the root of this equation because it is essentially the same equation. That's मैंने side switch किया. So if I write y is equals to e to the 2x minus 5 minus cos 3x, या say f of x. So the root of this equation is the value for which f of x is equals to 0. Okay, so f of
0.7 and f of 0.8. F of 0.7 is negative 0.44 and f of 8 is 0.69. अगर मैं इसको यहाँ पे प्लॉट करूँ f of x 0.7 0.8, this is minus, sign important है, value as such important नहीं है, and this is plus 0.6. So it must have at least one root. It can have two, it can have three, but should have at least one root. This implies at least one root in the given interval, and since we know it has only one root, so we can be certain that root lies in the given interval, because we showed that there need be at least one root in this interval, and it's given के function का root है ही एक, तो वो एक root फिर यहीं पे होगा. Okay, show that if a sequence of values given by the iterative formula converges, then it converges to the root of the equation in part A. We just need to resolve this without the indices and show that it resolves to this equation. So I'll start with x is equals to 1 by 2 ln 5 plus cos 3x. X square is equals to ln 5 plus cos 3x e to the, oh, sorry, it's not x square, it's 2x. 2x. So e to the 2x is equals to 5 plus cos 3x, and this is the same equation given in the question. So this shows that the convergence, yeah, the point to which this converges is the root of this equation. We're supposed to use the iterative formula to find the root that should exist in the interval. Okay, so xn plus 1 is equals to 1 by 2 ln 5 plus cos 3xn. I'll start with x0, एंड आई नो के जो इंटरवल है 0.7 से 0.8 में है, कहीं ना कहीं रूट है, तो आई स्टार्ट फ्रॉम 0.750 एंड देन आई पुट दिस यहाँ पे एंड आई विल गेट माई x1 यहाँ से. सो माई x1 as I calculated is 0.73759 and then x1 को यहाँ रख के x2 यहाँ से आएगा और इस तरह करते जाने बेसिकली अनटिल आपका जो सीक्वेंस बन रही है ये कन्वर्ज कर जाए. 5 डेसिमल पीसेस तक करते हैं फॉर द सेक ऑफ एक्यूरेसी. 0.x2 will be 74094, x3 will be 0.74003, x4 will be 0.74028, x5 will be 0.74021, x6 is 0.74023. आहिस्ता आहिस्ता they are starting to converge, but I just need to make sure कि 5 decimal places तक ये converge कर जाए. 0.74022 and then x8 is the same up to 5 decimal places and x9 is the same, so it has converged. So जो मेरा आंसर है it is 0.74022 for 5 decimal places, but each iteration का 5 decimal places तक मांगा था और जो आंसर है वो 3 decimal places तक देना है. So x is equals to 0.740 is the answer.
Moving on to question 6. The diagram shows the curve. M is the maximum point, and we are supposed to find the exact coordinates of M. Okay, maximum point implies that the gradient at M is 0. Y is equals to x e minus ax. And then dy by dx would be x को differentiate किया तो 1 e to the minus ax. And then e to the minus ax को differentiate किया तो minus a e to the minus ax into x. And this is equal to 0. So what we essentially have is k e to the minus ax, 1 minus ax is equals to 0. Now this cannot be 0. It is implying that 1 minus ax is 0, which implies that x is equals to 1 over a, and then y is equals to 1 over a e to the minus a, 1 over a, which is 1 over a e to the minus 1, which is 1 over a e. So ये y के coordinates आ गए, so m is 1 by a comma 1 by a into e. And this will be your answer. उसके बाद find the exact value of this integral by parts. We know by parts के according u integral of uv prime is uv minus integral of u prime v. We integrate 0 से 2a तक. Let's call it I. Then u is x, u prime is 1, and v prime is, and then minus a. इसका डेरिवेटिव पावर का डेरिवेटिव माइनस ए था तो माइनस ए से डिवाइड कर दिया सिंपली. उसके बाद बस फार्मूला में पुट करना है तो यू वी इज माइनस एक्स e to the minus ax over a, और लिमिट्स लगानी है माइनस इंटीग्रल ऑफ माइनस u प्राइम v माइनस e to the minus ax over a 0 से 2a तक. यहाँ पे दो माइनसेस हैं तो इसको मैं सिंपली प्लस लिख सकता हूँ, और लिमिट्स लगानी है माइनस 2 by a e into minus a 2 by a over a minus 0. इस पे लोअर लिमिट लगाई तो 0, ये बॉक्स उसके लिए आ गया. और जो ये इंटीग्रल है दिस इज सिंपली माइनस 1 over a square e to the minus ax with the limits. मैंने यहाँ लिमिट्स गलत लिखी हुई. Okay, so this is a से a कैंसिल हुआ, -2 over a square e square because e की पावर 2 है, -2 है, वो नीचे जाके +2 हो जाएगी. Then plus -1 over a square e की पावर negative a into 2 by a minus, because we lower limit minus हो रही है, -1 over a square e to the 0, which means -2 over a square e square -1 over a square e square, and then plus 1 over a square, which is simply 1 over a square. अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 1, and then -3
over e square को I can write just e to the minus 2, and this will be our answer to part B. Question 7 we are supposed to show this identity. So this is cos square theta का square minus sin square theta का square which is just a square minus b square. So I can write cos square theta minus sin square theta cos square theta plus sin square थीटा. तो ये तो सिंपली 1 हो गया, और cos square theta minus sin square theta is 1 plus cos 2 theta over 2 half angle identity minus 1 minus cos 2 theta over 2 which is half plus uh, cos theta by 2 minus half plus cos theta by 2. ये cancel out हुआ, ये half plus half is 1, so final answer is cos 2 theta as we were supposed to show. So 7a done. 7b में exact value of the integral, और इसको हम लिख सकते हैं पहले. लेट मी जस्ट show के cos square 4 minus sin 4 is cos 2 theta, and then 4 sin square theta cos square theta is 2 sin theta cos theta का whole square, and the अंदर वाली चीज is just sin 2 theta का square. Okay, so the integral we are solving is, yeah, pi by 8 negative pi by 8 cos 2 theta plus sin 2 theta squared d theta. तो इसको मैं दो पार्ट्स में कर दूंगा. सबसे पहले इंटीग्रल ऑफ cos 2 theta with the given limits. cos का इंटीग्रल होता है sin, आर्ग्यूमेंट का डेरिवेटिव इज 2, से 2 से डिवाइड किया, pi by 8 negative pi by 8, कैलकुलेटर में पुट किया, माइनस किया, तो आपके पास आ जाएगा हाफ टू sin pi by 4 and then plus sin pi by 4, और जो ओवरऑल आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा हाफ रूट 2. इस इंटीग्रल का आंसर आ गया. दूसरी बार में आपके पास है sin 2 थीटा का स्क्वायर डी थीटा विच इज सिंपली sin, इसको मैं sin स्क्वायर 2 थीटा लिख सकता हूँ, और sin स्क्वायर की जो आइडेंटिटी होती है इन टर्म्स ऑफ cos 2 थीटा आई कैन यूज दैट अगेन. मैं इसको लिख सकता हूँ नेगेटिव पाई बाई 8 हाफ माइनस कॉस 4 थीटा, क्योंकि एंगल को डबल करना होता है. थीटा इफ यहाँ थीटा होता है तो यहाँ 2 थीटा आता है, 2 थीटा है तो 4 थीटा आएगा, एंड देन डी थीटा. सो इधर भी दो चीज़ें हैं, दो पार्ट्स हैं, तो दिस इज थीटा बाय 2 पाई बाई 8 और नेगेटिव पाई बाई 8, देन इट इज साइन 4 थीटा बाई 8, क्योंकि आर्ग्यूमेंट का डेरिवेटिव इज 4, नीचे 2 ऑलरेडी है, सो दैट्स एन 8, एंड उस पर भी लिमिट्स
π/8 से -π/8 तक है। ओके, सो इस लिमिट में इट इज 1/2 π/8 minus π/8. So the two minuses makes it a plus. Then minus 1/8 sine π/2 minus sine π/2. Two minuses make it a plus. I'm just putting in the limits mentally to see. So it's π/8 because I have two π/8s and मैं उनका half करूँ तो final answer is just π/8. Then this is 1 plus 1 which is 2. So minus 2/8 which is 1/4. मेरे एक आंसर ये रहा, एक आंसर ये रहा. So I simply root 2/2 plus π/8 minus 1/4. Okay, question 8. आपको OA, OB और OC given है और L1 passes through BC. There is a point B, एक C है, and then L1 passes through that. If you see, so BC is parallel to L1, so we need to find BC first, and BC is OC minus OB, which is OC 8i minus 5i 3i, 5i minus 2i is again j, and then minus 3k minus 0k is minus 3k. So this is 3, 3 minus 3. तो जो हमारा वेक्टर पैरेलल टू द लाइन है उसको मैं 3, 3 minus 3 या 1, 1 minus 1 भी लिख सकता हूँ क्योंकि द मैग्नीट्यूड डज नॉट मैटर, डायरेक्शन सेम ही होनी चाहिए. ओके, सो L1 की इक्वेशन के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए होता है और एक वेक्टर जो उससे पैरेलल हो वो चाहिए होता है. L1 is such that R is equals to the point on the line. B और C में से दोनों यूज कर सकते हैं, मैं B यूज कर लेता हूँ. तो 5 2 0 प्लस लैम्डा 1 1 माइनस 1. अब 1 1 माइनस 1 क्यों यूज किया, क्योंकि L1 एक लाइन है, 3 3 माइनस 3 से ये वाला वेक्टर है जो इससे पैरेलल है. आई नो क्योंकि वो गिवन है काइंड ऑफ B और C लाइन पे है. तो 3 3 माइनस 3 का जो डिवाइड का 1/3 अगर मैं ले लूँ विच इज 1 1 माइनस 1 दिस, वो भी लाइन पे होगा, तो आई कैन यूज दैट एज वेल एंड दैट इज द सिंपलेस्ट केस. सो मैं L1 की इक्वेशन में वो यूज करूंगा और rather than using IJ मैं कॉलम फॉर्म में लिख रहा हूँ so that it is ज़्यादा visually easier to resolve बाद में. L2 की इक्वेशन गिवन है. L2 is such that R is equals to minus 2 1 4 plus mu 3 1 minus 2. और हमें L1 और L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट्स ढूंढने हैं जिसके लिए हमारे पास तीन इक्वेशन है. 5 प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 3 म्यू, या फिर 2 प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 प्लस म्यू, या फिर माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 म्यू. 1 2 3 तीनों एलिमेंट्स के हिसाब से. सो 3 implies कि जो my lambda is 2 म्यू माइनस 4, बेसिकली माइनस 1 से मल्टीप्लाई करा है, तो put in 1, so I will get 5 plus 2 mu minus 4 is equals to minus 2 plus 3 mu, implying k 7 minus 4, 7 plus 7 minus 5 plus 2 minus 4 is equals to 2 mu plus 3 mu. So 7 minus 4 is 3, and then this is minus, so mu is equals to 3, और उसको वापस यहाँ रखा तो वहाँ से आ जाएगा
के लैम्डा इज 2। तो जो कोऑर्डिनेट्स हैं इंटरसेक्शन पॉइंट के, वो मैं L2 में म्यू क्यू 3 या फिर L1 में लैम्डा को 2 दोनों से निकाल सकता हूँ। इन एनी केस यू कैन वेरीफाई कि दोनों सेम ही आंसर देंगे। 5 + 2 is 7। मैंने ये इक्वेशन यूज़ की है, 5 plus lambda for the x coordinate 7, then 2 plus lambda is 4, and minus lambda is just -2. 7, 4, -2 will be our intersection points. The point D on L2 is such that AB is equals to BD, और हमें OD, जो D का पोजीशन वेक्टर है, से OD हमें वो ढूंढना है। D lies on L2, तो हम डी के लिए पोजीशन लिख सकते हैं कुछ इस तरह, -2 + 3 म्यू, 1 + म्यू, and then 4 - 2 म्यू। अब इसमें म्यू इज ए स्पेसिफिक कांस्टेंट रादर देन द जनरल म्यू जो हमें हेल्प कर रहा था हमारी एल्टो को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो एक स्पेसिफिक कांस्टेंट को मैं म्यू नॉट लिख देता हूँ। और बस अब मुझे म्यू नॉट की वैल्यू ढूंढनी है यूजिंग ए बी एंड बी डी, जिससे मुझे अपना ओडी मिल जाएगा। और म्यू नॉट कैसे ढूंढना है, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ए बी चाहिए। ए बी इज इक्वल्स टू ओ बी माइनस ओ ए, which is 7 1 -4. this you can see कि ओ बी माइनस ओ ए, 5 -2 is -7, then 2 - 1 is 1, and 0 - 4 is -4. So it's 7 1 -4. And this AB without the arrow represents the magnitude of it. So जो AB है, it's under root 7 square plus 1 square plus 4 square. So it is under root 66. Or we can say कि AB square is equals to BD square, and we can write AB square is equals to 66 to be used later. And then BD is OD minus OB। तो मुझे इसमें से OB के पॉइंट्स माइनस करने हैं। -2 + 3 म्यू में से 5 माइनस करना है, तो -2 - 5 इज -7 + 3 म्यू नॉट। बेसिकली OB मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, OB इज 520। और मैं OB माइनस कर, मेरा सिस्टम क्यों खराब, तो इसमें से 5 माइनस किया तो -7, then 1 + म्यू नॉट -2 is -1 + म्यू नॉट, and then 4 - 2 म्यू नॉट -0 is simply 4 - 2 म्यू नॉट। अब BD square is 3 म्यू नॉट -7 whole square plus म्यू नॉट -1 whole square plus 2 म्यू नॉट -4 होल स्क्वायर। मैंने इसका साइन बदल दिया क्योंकि मैं होल स्क्वायर कर रहा हूँ, तो म्यू नॉट पहले लिख के मुझे ज़्यादा आसानी रहेगी। एंड वी नो कि दिस इज इक्वल टू 66 बिकॉज 66 इज AD स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है क्वाड्रेटिक, जिससे हम म्यू नॉट निकाल के वापस यहाँ पुट करके अपना OD निकाल लेंगे। लेट मी सॉल्व फॉर म्यू नॉट। सो दैट इज 9 म्यू नॉट स्क्वायर -42 म्यू नॉट plus 49 plus म्यू नॉट square -2 म्यू नॉट plus 1,
plus 4 mu naught square minus 16 mu naught plus 16 minus 66 is equals to 0. और इसको सिंप्लीफाई कर लूँ तो 14 mu naught square minus 60 mu naught is equals to 0, which implies कि mu naught is either 0 or mu naught is 30/7. For the case कि mu naught अगर 0 है तो what does that mean? What that means is कि OD हमारे पास -2 1 and then 4 है, बट अगर हम याद करें -2 1 4 हमारे पास OA है, which means कि D is the same point as A, and that will make sense because इस इक्वेशन में अगर हम A to B का डिस्टेंस देखें और D to B का डिस्टेंस देखें एंड इफ अगर A है then it is true कि A to B का डिस्टेंस is the same as B to A. So ये आंसर आना चाहिए था, but it's not the one we are looking for. हम एक separate D ढूंढ रहे हैं तो we just neglect this, and for this case we have OD is equals to -2 plus 30 -2 plus 90/7 1 plus 30/7 4 minus 60/7 position matrix के फॉर्म में. So this is 76/7 37/7 and then minus 32/7. So ये आपके OD के कोऑर्डिनेट्स आ गए जो आपसे पूछा है. OD का पोजीशन वेक्टर आ गया जो आपसे पूछा हुआ था. क्वेश्चन नंबर 9. Z ओमेगा को प्योर A प्लस BI की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. Z omega is equals to 1 minus I minus 3 plus 3 root 3 I. So 1 into minus 3 is minus 3. Then 1 into 3 root 3I is 3 root 3I. Then minus I into minus 3 is plus 3I, and minus I into plus 3 root 3 in I is minus 3 root 3 I square, and I square is -1, सो ये प्लस हो जाएगा और मैं आई स्क्वायर को यहाँ से हटा देता हूँ और ये हो जाएगा -3 प्लस 3 रूट 3 प्लस 3 प्लस 3 रूट 3 आई, एंड दिस विल बी योर आंसर जिस फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना था. हमारे पास ZW आ गया. Express Z in omega in polar form. Okay, so Z is equals to 1 minus I, and R is equals to mod of Z, which is under root 1 square plus 1 square, which is under root 2, and alpha is tan inverse of 1 over 1, which is pi/4. वन ओवर वन इसलिए क्योंकि मैंने इस कोफिशिएंट और इस कोफिशिएंट के मैग्नीट्यूड्स को ही कंसिडर किया. उसके बाद जो एक्चुअल एंगल होता है थीटा, वो मैं क्वाड्रेंट से जज करूँगा. सो थीटा है हमारे पास 1 माइनस आई फोर्थ क्वाड्रेंट में, और इस रेंज के हिसाब से थीटा मेरे पास -π/4 हो जाएगा. तो z इज इक्वल्स टू √2e माइनस आई π/4, और ओमेगा के लिए ओमेगा इज व्हाट्स ओमेगा -3 प्लस 3 √3 आई,
R is again mod of omega इस केस में, which is 3 का square plus 9 by 3, which is under root 36, 6. And alpha is tan inverse of 3 root 3 over 3. फिलहाल मैं पॉजिटिव ही ले रहा हूँ, which gives me a pi by 3. और अब judging by the quadrant, -3 plus 3 इस quadrant में है. This angle is pi by 3, तो जो थीटा होगा वो 2 pi by 3 होगा. थीटा is 2 pi by 3 and omega is 6e minus I 2 pi by 3. इसके बाद पार्ट सी में आर्किन डायग्राम बना के यू नीड टू शो के इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस मींस के आइसोसेलेस एंड राइट एंगल ट्रायंगल. सो आइसोसेलेस मींस के इसकी दो साइड्स इक्वल होंगी, ओ ए बी, where A is your omega and B is your Z omega. तो आपकी एक्सेस आ गई, रियल एंड इमेजिनरी. मैं अगर ये प्लॉट करूँगा, अगर P is Z omega which is -3 plus 3, so this is a positive number and this is a positive number, तो वो इस quadrant में है. And then A के केस में it's omega और omega मेरा -3 plus 3 root 3 इस quadrant में है. B A origin. I need to show कि ये एक isosceles right angle है. तो मैं सबसे पहले ओ ए का मैग्नीट्यूड निकाल लूँ. आई मीन ओ ए का मैग्नीट्यूड तो निकाला हुआ है. A is equals to omega and B is equals to Z omega. O A is 6 because that is omega का मैग्नीट्यूड जो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ. And O B is Z omega का मैग्नीट्यूड. Z omega मैंने यहाँ निकाला था. Z omega का मैग्नीट्यूड हो जाएगा दैट नंबर का मैग्नीट्यूड, जो कि मैं आपको निकाल के बता देता हूँ. बट से पहले ओ बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं just for the sake of it. And B, okay, ए बी का मैग्नीट्यूड आई मेंट. एंड जो ए बी है, ए बी का मैग्नीट्यूड दैट इज 3 रूट 3 प्लस 3 का मैग्नीट्यूड विच इज अंडर रूट, आई थिंक यहाँ पे एक आई भी आएगा, अंडर रूट 9 प्लस 27, इट गिव्स 6. जो ए टू पी अगर मैं वेक्टर के हिसाब से देखूँ तो जो मेरा ए टू पी वाला वेक्टर है दैट इज सिंपली ओ बी माइनस ओ ए. तो जो मेरे ओ बी आए थे -3 प्लस 3 रूट 3, मैं उसमें से ओ ए माइनस कर दूंगा. ए वॉज -3. तो what I'm doing is कि this minus this gives me the AB which is 3 root 3 and then 3 plus 3 root 3 minus 3 root 3 which gives a 3i. Yes, 3i. So
इस तरह से मेरे पास ये चीज़ आई थी और इसका मैग्नीट्यूड 6 था। तो ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी। सो ये इसकी दो साइड्स इक्वल हैं, सो यस इट इज़ एसोसिएट्स। और जो इक्वल साइड्स हैं वो ये वाली हैं, नॉट ड्रॉन टू स्केल बट या इसका मतलब हमारे पास ये एंगल और ये एंगल बराबर है, और आई नीड टू शो कि ये एंगल 90 होने चाहिए। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं बनी बट या, तो राइट एंगल शो कराने के लिए मुझे ये एंगल चाहिए। मुझे जेड ओमेगा का जेड डब्ल्यू जो है उसका क्या कहते हैं आर्ग्यूमेंट निकालना होगा। अल्फा इज, और इस केस में डायरेक्टली थीटा क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही है, तो दैट इज tan इनवर्स ऑफ 3 प्लस 3 रूट 3 over minus 3 plus 3 root 3, which is 5 pi by 12. So this is 5 pi by 12 and the total angle is omega ka argument, which is 2 pi by 3. So this angle is 2 pi by 3 minus 5 pi by 12, which is pi by 4. So this is pi by 4 implies this is pi by 4, and this is then pi minus pi by 4 minus pi by 4, which is pi by 2. This is what we were looking for. Sorry मेरी वर्किंग थोड़ी ऊपर नीचे हो गई, यहाँ स्पेस थी बची थी और मेरा पीडीएफ का पेज थोड़ा सा शेक कर गया था. Using your answer to part B, we need to prove कि tan of 5 by 12 pi, which is यहाँ पे, is equal to this. Okay, I think we were supposed to go the other way around because मैंने already z omega का argument निकाल लिया है, but we know कि z omega का, if we know कि this is pi by 2, so this should be pi by 4 and this should be pi by 4 and the whole angle is 2 pi by 3, so this should be 5 pi by 12. So the tan of 5 pi by 12 will again equal to the imaginary part of z omega over the real part of omega, z omega, which just give us 3 plus 3 root 3 over minus 3 plus 3 root 3. तो अगर मैं 3 इसको कैंसिल आउट करता हूँ, सो आई विल बी लेफ्ट विद रूट 3 प्लस 1. मैंने ऑर्डर स्विच कर दिया, रूट 3 माइनस 1, एंड दैट इज व्हाट वी वर सपोज्ड टू शो. By writing y is equals to sec cube as 1 over cos cube, we need to show dy by d theta is 3 sine theta into sec 4 theta. So y is equals to cos minus 3 theta, and then dy by d theta is minus 3 cos minus 4 theta into minus sine theta. So this is y is equals to minus 3 cos minus 4 minus minus plus 3 sine theta into 1 over cos 4 theta. So again, we can use this to say कि y is 3 sine theta sec 4 theta, and this is done. Question 10 part B. Differential equation is given and we need to find cos theta when x is 0. Give your answer correct to 3 significant figures. Okay, so x square plus 9 sine theta d theta by dx is equals to x plus 3 cos 4 theta. सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स करेंगे इसमें, तो मैं इसको नीचे ले आऊँगा और इसको इधर ले आऊँगा. सो व्हाट आई हैव इज साइन थीटा
over cos 4 theta d theta is equals to x plus 3 over x square plus 9 dx। अब इस चीज को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा sec 4 theta d theta is equals to x plus 3 over x square plus 9 dx। अब अगर मैं दोनों साइड्स को 3 से मल्टीप्लाई कराता हूँ, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, सो यू सी कि दिस इज द सेम थिंग जो मैंने यहाँ पे शो की थी, जिसके ये y हमें नोन है, sec क्यूब थीटा। We just have to integrate both sides, और लिमिट्स नहीं है तो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आना ज़रूरी है। दिस इज सिंपली sec क्यूब थीटा, और इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आप एक जगह लगा दो, फर्क नहीं पड़ता। और अब बस हमें ये वाला इंटीग्रल लेना है, विच इज सिंपली 3x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस प्लस 9 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx। इस इंटीग्रल को मैं दो पार्ट्स में रिजॉल्व करूँगा। 3x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9 is simply 3 over 2 degree of 2x x square plus 9। अब जो x square plus 9 है उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो मैं सिंपली नेचुरल लॉग लगा दूंगा। इट्स 3/2 again x square plus 9, एक पार्ट आ गया, और जो इंटीग्रल ऑफ 9 बाय x square plus 9 है वो सिंपली मेरे पास 3 tan इनवर्स ऑफ x by 3 आ जाएगा। जो फॉर्मूला शीट गिवन होती है वहाँ से यू कैन सी कि 1 over x square plus 9 का इंटीग्रल इज tan इनवर्स ऑफ x by 3। हाँ, ओके, दोनों इंटीग्रल्स को साथ, बेसिकली सारे इंटीग्रल्स को साथ लिखना है, तो sec क्यूब थीटा प्लस c is 3/2 ln x square plus 9 plus 3 tan inverse of x by 3। अब सी को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन गिवन, एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन है कि व्हेन x is 3 थीटा is pi by 3, so x is equals to 3 थीटा pi by 3 implies कि जो c है that is equals to 3/2 ln 3 का स्क्वायर is 9 plus 9 18, 3/2 ln 18 plus 3 tan inverse of 1 minus sec cube of pi by 3। तो ये हमारे पास c आ गया। अब हमें ढूंढना है cos थीटा when x is equals to 0, I guess, या when x is equals to 0। so it means कि sec, पहले हम sec cube थीटा ढूंढते हैं, फिर हम बाकी cos थीटा वहाँ से ढूंढते हैं। sec cube थीटा is, sec cube theta would be 3/2 ln 9 plus 3 tan inverse of 0, which is simply 0 minus c। और c की न्यूमेरिक वैल्यू मैं वहाँ लिख देता हूँ, 3/2 into ln 18 plus 3 tan inverse of 1, it is 6.69। सो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 3/2 ln 9, 3.295
6.69 minus plus 3.295. C was यहाँ से माइनस सेक क्यूब। ओ मैंने सी की वैल्यू गलत निकाल ली, मैंने टेन इनवर्स के बाद सेक क्यूब माइनस नहीं किया था, सॉरी। 3/2 again 18 plus 3 tan inverse of 1 minus 1 over cos of pi by 3 का क्यूब। एक्चुअल में इट्स -1.308 तो -1.308। मैंने ये चीज़ अपने कैलकुलेटर में पुट नहीं की थी बेसिकली। तो sec cube theta would be 3.295 minus 1.308, 1.987. Interesting. And then your cos theta on 1/1.987 to power 1/3. ये आंसर गलत आ रहा है। मैंने अपने कैलकुलेटर में कुछ गलत किया होगा, बट when you get sec cube you can just go 1/cos cube theta and then you can divide, take both sides like this, and then cos theta उधर, वो number इधर, and इधर से basically you can resolve cos theta which is supposed to be 0.601. 0.601 आपका आंसर हो जाएगा। And this is all for this paper, I guess. Yeah, I don't know कहाँ पे मैंने मैथ्स कैलकुलेटर में रखने में I guess कोई मिस्टेक की है। And this is a question mark. हम cos theta ढूंढ रहे थे। 3/2 again 18 because 3 tan inverse minus sec cube of 5/3. एक दफ़ा दोबारा कर लेते हैं। 3/2 ln 18 plus 3 tan inverse of 1 minus 1 by cos of 5/3 का cube minus 1.308. या इधर प्लस आएगा बिकॉज माइनस सी था और सी माइनस में था, तो यहाँ प्लस आएगा। So this would be 1.308 plus 3.295, which is 4.603. So sec cube is 4.603. So 1/cos cube is 4.603, implying cos cube is 1/4.603. Cos theta is 1/4.603 की power 1/3, and that must be the answer 1, जो मैंने पहले निकाला था 4.603 की power 1/3, yeah, 0.601. And this is all for this paper. Thank you.